Good evening, everyone. Welcome to EduTap. You are watching 10 MCQs a day series. This MCQ series is created to give you the edge in your UPSC EPFO exam. So subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from us. Today, we are going to discuss MCQs from the first chapter of Indian polity, which is the historical background. So let's start discussing MCQs. And the first question is, which one of the following was provided by the Regulating Act of 1773? It made the Presidency of Bombay supreme over Bengal and Madras. It distinguished between the commercial and political functions of the company. It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. You have to attempt this question and all the other questions which will follow in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means the Regulating Act of 1773. It designated Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. And the first person who became the Governor General of Bengal was Warren Hastings. Okay, he became the first Governor General of Bengal. Okay, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एक बार बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए, इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे सुप्रीम ओवर बंगाल एंड मद्रास. ठीक है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है बिकॉज इस टाइप का प्रोविजन किसी भी एक्ट में आपको नहीं मिलेगा फ्रॉम 1773 टू 1947. ठीक है, कहीं पे भी आपको इस टाइप का प्रोविजन नहीं मिलने वाला है. ऑप्शन बी, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. दिस प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ठीक है, वहां से लिया गया है. ऑप्शन डी, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल. ये वाला प्रोविजन आपको मिलेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements is correct according to the Charter Act of 1813? Next question is, which one of the following statements is correct according to the Charter Act of 1813? It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested him all the civil and military powers. Option B, it ended the activities of East India Company as a commercial body. It abolished the trade monopoly of East India Company in India, and now the Indian trade was thrown open to all the British merchants. Fourth, the Charter Act of 1813 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. You have to attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means the Charter Act of 1813. It abolished the trade monopoly of East India Company in India, and now the Indian trade was thrown open to all the British merchants. See, East India Company was enjoying a trade monopoly since the year 1600s, okay, which was abolished by the British Parliament through the Charter Act of 1813. But the East India Company retained its trade monopoly in two things. First, it was trade with China. Second, it was trade in tea. Okay, except these two, all the trade monopolies of East India Company was abolished by the British Parliament through the Charter Act of 1813. तो ये हो गया हमारा सही आंसर. एक बार बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. हमारा जो ऑप्शन ए है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये वाला प्रोविजन आपको मिलेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में. ठीक है, एंड द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक. ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन डी है, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ये दोनों प्रोविजंस आपको मिलेंगे इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following statements are correct according to the Charter Act of 1853?
It separated legislative and executive functions of Governor General Council. It introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servants. It introduced local representation in Indian Legislative Council. Fourth, of 6 new legislative members in the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal, and Agra. You have to choose the correct answer, and your options are 1 and 2, 1, 2, and 3, 3 and 4, and option D, all of the above. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. कर लिया attempt? चलो, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option D. That means all the statements which are given here, they are absolutely correct according to the Charter Act of 1853. एक बार डिस्कस कर लेते हैं जितने भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट है हमारा, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. 1853 के पहले गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी वही परफॉर्म कर रही थी लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी. बट आफ्टर 1853 6 new legislative members were appointed in the Governor General Council for this legislative purpose, for this legislative function, and out of 6 members, 4 members, ठीक है, were to be appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal, and Agra. ठीक है, ये जो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस था हमारा, ऐसा कुछ हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे कंट्री में ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें थी, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज़ें हमारी कंट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही थी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे प्रोविजंस दिया हुआ है, यहाँ पे एक्ट्स दिया हुआ है. यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन among the inhabitants of British territories in India. Second है Charter Act of 1833. It deprived Governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Next है Pitt's India Act of 1784. It provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta, which comprises of 1 Chief Justice and 3 other judges. Fourth है Charter Act of 1853. It separated legislative and executive functions of Governor General Council. You have to tell which one of the following are correctly matched. And your options are 3 only, 1 and 2, 1, 2 and 4, and option D, none. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Hello, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means first, second and fourth provisions, they are correctly matched with their acts. Okay, while the third one is not correctly matched because the provision for establishment of Supreme Court at Kolkata with 1 Chief Justice and 3 other judges, ये वाला provision आपको मिलेगा Regulating Act of 1773 में. ठीक है, ना कि Pitt's India Act of 1784. ठीक है, now let's move towards the next question. Next question is, which of the following acts introduced ordinance for the first time? Indian Council Act of 1892, Indian Council Act of 1861, Government of India Act 1919, Government of India Act 1909. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. वैसे ये बहुत easy question है. चलो कर लिया attempt. I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option B. That means Indian Council Act of 1861. It introduced the power to issue ordinance for the first time, and this power to issue ordinance was given to the Viceroy of India. Okay, during emergency he can issue ordinance, and the validity of that particular ordinance will be for 6 months. Okay, now you have to tell me in the comment section below that at present in our country
which constitutional position has the power to issue ordinances and what is the validity of their ordinances. Okay, now let's move towards the next question. Which one of the following statements are correct according to the Government of India Act 1858? The act is also known as the Act for Good Government of India. Second, it introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servants. Third, it changed the designation of Governor General to the Viceroy of India. Fourth, it introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. You have to select the correct answer, and your options are 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3, and option D 1 and 2. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Hello, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means first and third statement, they are absolutely correct according to the Government of India Act 1858. सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के हैं. ठीक है, इसको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है. ठीक है, जो सही स्टेटमेंट्स हैं उन पे आते हैं. देखो, इन द ईयर 1857 हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जब रिवोल्ट हो रहा था तब एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग इंडिया. ठीक है, बट आफ्टर दिस थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 the British Parliament they terminated the rule of East India Company and now the British Crown will rule India, and that is why this act of 1858 is known as the Act for Good Government of India. This act of 1858 also changed the designation of Governor General of India to that Viceroy. ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो हम लोग उस पोजीशन को बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया तो हम लोग उसी पोजीशन को, ठीक है, हम लोगों ने क्या बोल दिया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोलने लग गए. ठीक है, देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अ सर्वेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया is, or you can say was, a member of British cabinet and he was responsible to the British Parliament. Okay, now let's move towards the next question. Next question is, with the reference to the Government of India Act 1919, consider the following statement. It divided the provincial subjects into two parts, transferred and reserved. Second, it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. Third, it relaxed the central control over provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. Fourth, it introduced system of communal representation. You have to tell which one of the following statements given here are correct. And your options are 1 and 2, 2 and 4, 1, 2 and 3, and option D, all of the above. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means first, second, and third statement, they are absolutely correct according to the Government of India Act 1919. Fourth statement incorrect इसलिए है because this provision of communal representation was introduced through the Act of 1909. ठीक है, 1909 में सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ओनली. ठीक है, फिर बाद में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 के थ्रू दिस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड टू अदर कम्युनिटीज एज वेल. ठीक है, तो दैट इज वाई फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. First, second, and third statement, they are absolutely correct. Yes, the Government of India Act 1919, it divided provincial subjects into two parts. First is transferred subject and second one is the reserved subject. ठीक है, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डायरकी. ठीक है, which basically means dual rule. ठीक है, dual rule. इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है? ठीक है, a legislature, a legislative house, ठीक है, which has two houses. ठीक है,
इज कॉल्ड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें हमारे पास दो हाउसेस हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, while the Rajya Sabha is the upper house. So it has two houses, and that is why we can say that Indian Parliament is a bicameral legislature. ठीक है। उसके बाद फिर 1919 के एक्ट के थ्रू इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कंट्री में। इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे, बट आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरेक्ट इलेक्शंस होने लग गए हमारे कंट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा वो भी एब्सोल्युटली सही है। ठीक है। आज हम लोग देखते हैं 7 शेड्यूल में कि 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट में ठीक है ये है कि सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल बना सकती है। ठीक है। बट इसको ये जो सेपरेट किया गया था ये फर्स्ट टाइम किया गया था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। उससे पहले कोई सेंट्रल या फिर स्टेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सेंट्रल सब्जेक्ट दिया और फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया। ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सेकेंड रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम लोग डायरकी या फिर डुअल रूल भी बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, consider the following statements regarding Indian Council Act of 1909. This act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Lord Chelmsford was the Secretary of State for India and Montagu was the Viceroy. Second, it enlarged the deliberative functions of the Legislative Council at both central and provinces level. You have to tell which one of the following statements given here are correct, and your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2. Option D, neither 1, neither 2. Attempt this question in the comment section below and then I will tell you which is the right answer. Early attempt? Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option B. That means second statement is absolutely correct. First statement हमारा incorrect है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 is also known as Morley-Minto reform. Okay, Morley-Minto reform, where Morley was the Secretary of State for India and Minto was the Viceroy of India. Always remember that students कि जो पहला नाम आएगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का रहेगा, जो दूसरा नाम आएगा वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का रहेगा। ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। ठीक है। एंड दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। यस, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 it increased the functions of legislative council at both central and provinces level. Now the members of legislative councils can ask supplementary questions, move resolution on budget, and many more functions were assigned to them. Okay. Now let's move towards the next question. Next question is, consider the following statements regarding Government of India Act 1935. It abolished diarchy in provinces and introduced provincial autonomy in its place. Second, it provided for the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states as its unit. You have to tell which one of the following statements given here are correct, and your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2. Option D, neither 1, neither 2. Attempt this question in the comment section below and then I will tell you which is the right answer. Early attempt? Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option C. That means both the statements which are given here, they are absolutely correct. Yes, through the Government of India Act 1935, diarchy was abolished. ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि diarchy was introduced in India through the Government of India Act 1990. ठीक है। 1919 के थ्रू diarchy को इंट्रोड्यूस किया गया था, but through the Government of India Act 1935, diarchy was abolished in the provincials, and instead of diarchy, provincial autonomy was introduced. ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली सही है। एक प्रोविजन था 1935 एक्ट में
which was talking about establishment of All India Federation, which consisted of provinces and princely states as its units. But this All India Federation never came into being because the princely states refused to join this All India Federation. ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन सिर्फ पेपर पे ही रह गया था, इन रियलिटी कभी बन नहीं पाया था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, consider the following statements regarding Government of India Act 1947. It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with right to cede from the British Commonwealth. Second, it empowered the constituent assemblies of two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations, but they cannot repeal any act of British Parliament, including the Independence Act itself. You have to tell which one of the following statements given here are correct. And your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1, neither 2. Attempt this question in the comment section below, and then I will tell you which is the right answer. Early attempt. Chalo, I'm telling you the right answer. The right answer to this question is option A. ठीक है, that means only first statement is correct, second statement हमारा incorrect हो जाता है. ठीक है, yes, through the Government of India Act 1947, India was divided into two countries, namely India and Pakistan, and they were given the right to cede from the British Commonwealth. Second statement हमारा जो है वो आधा सही है और आधा गलत है. ठीक है, यहाँ second statement में it empowered the constituent assemblies of two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nations. यहाँ तक का statement हमारा absolutely सही है. गलत कहाँ से हो जाता है? यहाँ से, but they cannot. ठीक है, because यहाँ पे cannot दे दिया है, इसलिए ये statement गलत हो जाती है. Because the constituent assemblies of both the dominions, India and Pakistan, they were given power to repeal any act of British Parliament, including the Independence Act itself. That means Government of India Act 1947. Okay. And with that, students, we have completed today's session. Thank you for watching till the end. I hope you found this MCQs helpful in your preparation for UPSC EPFO exam. If you enjoyed this video and want more content like this, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends and leave your thoughts in the comment section. मिलता हूँ मैं आपसे next video में with another set of MCQs. Till then, keep practicing and stay focused.